A very good morning to all my dear students. I hope you all are doing very well. This is Sangeeta Mahavar, your social study teacher and students. Today we are going to start a new chapter of your textbook, that is chapter 10, Great People. Student, in this chapter we will come to know about the great peoples of India who has done something for our country so that's why their names are written in the history of India. So let's see further. The main content of this chapter, we will learn about social reformers, different social reformers of India, scientists, different scientists, king and emperors who comes in India or who are the part of India and has ruled the all over the India, and religions. So let's move forward. Social reformers. Now students, what is social reformers? Social reformers are the people who try to fight against the evil practices prevalent in a society. सोशल रिफॉर्मर्स वो पीपल होते हैं जो सोसाइटी में अगर कुछ चीजें बैड हो रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए एक्शन लेते हैं या फिर कुछ चीजें करते हैं ताकि वो जो इविल प्रोसेस है वो सब चीजें रुक जाए. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सोशल रिफॉर्मर्स, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए कुछ नया करना चाहते हैं. एंड some notable social reformers of India are Sant Kabir, Raja Ram Mohan Roy, Ramabai Ranade, Sir Syed Ahmad Khan. As you can see, these are the pictures. Sant Kabir, Raja Ram Mohan Roy, Ramabai Ranade and Sir Syed Ahmad Khan. Now we will see the detail of these all four social reformers. First is Sant Kabir. He was born in Varanasi. He was the son of a weaver. He was a disciple of Swami Ramanand. He was against caste system. He attacked hypocrisy in the society through his couplets, that is dohas. He purged that God is one. So, जो संत कबीर थे, He was born in Varanasi. और वो किसके बेटे थे? एक क्लोथ मेकर, दैट इज कॉल्ड एज बुनकर के बेटे थे. वो किसके स्टूडेंट थे? संत कबीर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ स्वामी रामानंद. अब इन्होंने किसके अपोजिशन में अपनी जो है आवाज उठाई? दैट मीन्स इन द अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, और उन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश करी बाय थ्रू दे couplets, that is दोहास. और ये मानते थे कि गॉड कौन है? एक वन ही है. ठीक है, he purged that God is one. Raja Ram Mohan Roy. Rajaji was born in Bengal in 1772. He was deeply hurt when his sister-in-law was forced to become sati when her husband died. He spent his entire life fighting against evil practices like sati, child marriage and caste system. He started Brahma Samaj society in India. So student, Raja Ram Mohan Roy is also called as Raja Ji. और वो कहाँ पर born हुए? He was born in Bengal in 1772. अब क्या हुआ कि एक टाइम पर उनकी सिस्टर इन लॉ थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई. अब जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो वहां पर एक रूल चलता था, एक प्रथा चलती थी, दैट मीन्स के जिस भी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाएगी उसे सती के रूप में फॉर्म होना पड़ता था. उसकी मतलब दैट सती मीन्स जो उनकी हस्बैंड की बॉडी जो बरिड होती थी उसी में उन्हें जन्म देकर मतलब कूद कर अपनी जान भी देनी होती थी. सो दैट इज कॉल्ड एज सती प्रथा. तो क्या हुआ कि उनकी सिस्टर इन लॉ का जब हस्बैंड की डेथ हुई सो उन्हें भी फोर्स्ड किया गया कि यू हैव टू बी सती एंड जस्ट डाइड विद हर हस्बैंड. सो ये चीज देखकर क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए, एज वेल एज उन्होंने उनकी एंटायर लाइफ उन्होंने फाइटिंग में निकाल दी अगेंस्ट कौन? इविल प्रैक्टिसेस लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, एज वेल एज कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिच पुअर के बेस पे, कास्ट सिस्टम के बेस पर। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की, दैट मीन्स ब्रह्म समाज की जो स्टेट स्टार्टेड किया उन्होंने। ओके, नेक्स्ट इज रामाबाई रानाडे। रामाबाई रानाडे holds a place of pride. Pride means अच्छी places पे रामाबाई रानाडे को जाना जाता है। Amongst the human social reformers, she founded the पूना सेवा सदन। उन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना की, that means founded किया, where girls were trained as nurses। यहाँ पर गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया जाता था for becoming a nurses. It also worked for the welfare or orphans and widows। अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ऑर्फन्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते थे वेलफेयर के लिए, एज वेल एज जो विधवा जो लेडीज होती थी उनकी भी हेल्प करते थे। सो दे आर कॉल्ड एज विडोज। सर सैयद अहमद खान, he was a Muslim reformer who did a lot to improve the condition of Muslims। ये सर सैयद अहमद खान जो थे, he is a Muslim reformer। किसके रिफॉर्मर थे? मुस्लिम के। और उन्होंने मुस्लिम्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें की। He was opposed to the injustice done to Muslim women and Parda system. To him, education was very important to change the society. Therefore, he started a college at Aligarh, which later came to be known as Aligarh Muslim University. सो स्टूडेंट्स, जो ये मुस्लिम के रिफॉर्मर्स थे और इन्हें इनजस्टिस होना, ह्यूमंस के साथ जो इनजस्टिस होना था, ही डू नॉट लाइक दैट। उन्होंने पर्दा सिस्टम का भी अपोज किया, जो पर्दा सिस्टम जो आज तक मुस्लिम में चलता है, दैट इज ऑल्सो ही हैज अपोज्ड। एंड हिम एजुकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एक सोसाइटी को फॉर्म अप करने के लिए। Therefore, he started, उन्होंने इसलिए क्या स्टार्ट किया, अलीगढ़ कॉलेज स्टार्ट किया, that is further known as Aligarh Muslim University. Now students, we will move to the scientist, the great scientist of India who has done something in old time. So their name has written in the history. Ancient times, India has great scientists to the world who have made valuable contribution in various fields of science, mathematics, astronomy and medical science. So students, here are some scientists who have made the valuable contribution in our history of India as well as in the world also. Some important scientists of India are C.V. Raman, Jagdish Chandra Bose, Dr. Homi Jahangir Bhabha, other like Dr. Raja Raman, S. Swaminathan, S. Chandrasekhar, Vikram Sarabhai, M.G.K. Menon are among the eminent scientists of India, and there are many more other scientists who has contributed a lot in the science as being a scientist. First, we will learn about C.V. Raman. Raman discovered the Raman effect in the field of physics. So, रमन जो सीवी रमन थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, रमन इफेक्ट किया, विच इज अ वेरी बिग इन्वेंशन फॉर द फिजिक्स। ही अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स। फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज भी मिला इन 1930। ही ऑल्सो रिसीव भारत रत्न इन 1955 और उन्हें नोबेल प्राइज के बाद भारत रत्न भी मिला इन 1955। एंड ही इज अ ग्रेट फिजिशियन। Now the next is Jagdish Chandra Bose. Jagdish Chandra Bose was a botanist. Now student, one question arises in your mind that what is botanist? So student, botanist is the person who studied about the plants. He was the first to claim that plants have life. So Jagdish Chandra Bose पहले इंसान थे जिन्होंने claim out किया that plants also have life. He invented crystallograph, which is used to measure the growth of plant. And student, as you can see in this image, this instrument is known as crystallograph. And Jagdish Chandra Bose has discovered this crystallograph to
measure the growth of plant. Now the next is Dr. Homi Jahangir Bhabha. Dr. Bhabha is called the father of India nuclear science. He established Homi Bhabha National Institute. So Dr. Bhabha is known as the father of Indian nuclear science. Nuclear science के father किसको बोलते हैं? We call that Dr. Homi Jahangir Bhabha is the what? Father of Indian nuclear science. He is also known as the father of Indian physics. So he is the person who is also known as the father of Indian physics, and he established Homi Bhabha National Institute. Two well-known Indian astronomers of ancient times are Aryabhatta and Varamihir. So students, now what is the meaning of astronomers? ऐसे persons who studies about sun, moon, stars and all the heavenly bodies are called as astronomers. So Aryabhatta and Varamihir are the astronomers of India that are well known. Chakra and Sushruta, famous physicians of ancient India. Even today, India is proud of having many renowned scientists well known throughout the world. So, this is the Aryabhatta, this is the Sushruta, and this is the Varamihir. So, students, they all are so popular and has been very good at that time. So, they have written in the history of India. Now students, we will move to the kings and emperors. In India, there have been many kings who worked for the welfare and benefit of the common people. India में बहुत सारे kings and emperors आए who have worked for the welfare और benefit. जो normal peoples होते हैं उनके welfare और benefits के लिए उन्होंने fight out किया और उनके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें की. So they are called as a good king and emperors. Now we will see the detailed study about these kings and emperors. Some important kings and emperors are Emperor Ashoka, King Krishnadev Narayan, Emperor Akbar. As you can see, Emperor Ashoka, King Krishnadev Narayan and Emperor Akbar. Emperor Ashoka. Ashoka was the greatest emperor of all times. He ruled over the India about 20,000 years ago. After the Battle of Kalinga, when he saw a large number of dead and wounded peoples, he realized the futility of wars and decided to give fighting forever. He then converted to Buddhism. So क्या हुआ? जो एम्पर अशोका थे, he was a great emperor, great king. So उन्होंने ruled out किया, over किया इंडिया पर 20,000 years ago. And जब बैटल ऑफ कलिंगा हुई तो उन्होंने एंडिंग में देखा कि a large number of peoples were dead. बहुत सारे लोग मर चुके थे as well as बहुत ज़्यादा लोग wounded हुए थे, that means जख्मी हुए थे. So finally ये सब जो बैटल हुआ, बैटल के बाद में जो इसके जो इफेक्ट्स आए, जैसे कि जो डिसएडवांटेजेस आए, उसे देखकर उन्होंने आगे जाके ये डिसाइड किया कि वो फाइटिंग को फॉर एवर छोड़ देंगे और बाद में वो धीरे से किस में कन्वर्ट हो गए? इनटू बुद्धिज्म. नाउ द नेक्स्ट किंग इज Krishnadev Narayan, King Krishnadev Narayan. Krishnadev Narayan was the famous king of Vijayanagar. कहाँ के famous king थे King Krishnadev Narayan? Vijayanagar. He also worked towards the welfare of people around 500 years ago. 500 साल पहले he has also worked for the welfare of the peoples. जो आम जनता थी, that means जो नॉर्मल पीपल्स थे, उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क आउट किया. He constructed a large number of public buildings and encouraged trade in his kingdom. उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए
रहने के लिए, दैट मीन्स बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन किया, एज वेल एज पीपल एंकरेज, जो ट्रेडिंग सिस्टम था, जो सामान को बेचना और लाने का जो सिस्टम था उसको एंकरेज आउट किया. नाउ ओनली ही वॉज अ ब्रेव एंड वाइज किंग. नॉट ओनली ही वॉज अ ब्रेव, बट ये वाइज किंग भी थे, ब्रेव भी थे एज वेल एज वाइज किंग भी थे. But also a good poet and a great writer. कृष्ण देव नारायण जो थे किंग, वो गुड पोएट भी थे एज वेल एज गुड राइटर भी थे, a great writer. He wrote a large number of books in Telugu लैंग्वेज में उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ बुक्स लिखी है, दैट मीन्स राइट अप की है. Now the next emperor is Emperor Akbar. Akbar was a Mughal king, but he believed in all the religions. He is ranked among the greatest ruler of all time. He too worked towards the welfare of the people during his reign. Art, music and literature was encouraged in his court. Now student, Akbar Mughal is a great king और ये इंडिया के ग्रेट रूलर्स के अंदर इनका नेम आता है. और जो अकबर थे, he believes in all the religions. ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते थे, वो सारे ही रिलीजन को इक्वल प्लेस देते थे, उनके लिए सारे रिलीजन इक्वल थे. ओके, एंड जो अकबर थे उन्होंने नॉर्मल पीपल्स के वेलफेयर के लिए भी बहुत ज्यादा वर्क किया ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ टाइम. और इनके पीरियड के टाइम पर आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को एंकरेज किया जाता था, प्रेफरेंस दिया जाता था उनके कोर्ट में. सो अकबर इज बीइंग अ ग्रेट किंग. Now students, we will move to the different types of religions that are followed in India, that in our nation. India is a secular country. Our country is known for the freedom of faith, worship and religion. It does not have any state religion. People of the different religions practice and purge the religion of their own choice. So student, जो इंडिया है हमारा सेक्युलर स्टेट, दैट मीन्स हर पीपल, यहाँ पर जो भी पीपल होगा वो अपने चॉइस से अपना रिलीजन को सिलेक्ट आउट कर सकता है और उसे आगे जाके प्रेफर कर सकता है. एंड दैट्स व्हाई इंडिया को हम लोग फ्रीडम, फेथ एंड वर्शिप कंट्री बोलते हैं. दैट मीन्स बिकॉज ये रिलीजियस कंट्री, यहाँ पर हर पीपल अपने हिसाब से रिलीजन को फॉलो कर सकता है, अपने जो गॉड है उनको वर्शिप कर सकता है, एज वेल एज हर चीजों में अपने हिसाब से फेथ आउट रख सकता है. यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का रिलीजन को फॉलो आउट नहीं किया जाता. सो इन इंडिया दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. सो इन इंडिया we can see different diversities, but in diversity also there is a unity. So the students, the first religion which we are going to learn about, that is Hinduism. It is the oldest religion in the world. सबसे पुराना religion कौन सा है? That is Hinduism. The Hindus who form the bulk of the Indian society are the followers of Hinduism. So हमारे यहाँ पे जो बल्क में जो हिंदूज मिलते, दे आर फॉलो द हिंदुइज्म एंड दे मेक द सोसाइटी. द वेदास, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता and epics like Ramayana and Mahabharata are the holy books of Hindus. These all are the holy books of Hindus. Hindu god is Brahma, Vishnu and Shiv are known as Trinity. So Brahma, Vishnu and Shiv, these all three combines and form the Trinity of Hindus, and the Hindus worship them. Now the next religion is the Islam. The followers of the Islam, they form the second largest religious community in India. First is Hinduism and the second is Islam, that is the Muslims.
Okay, so they formed the second largest religious community in India. The founder of the Islam was Prophet Muhammad. Give the message of love, peace and brotherhood. He asks people not to believe in it, does but to believe in only one God or Allah. The holy book of Islam is Quran. So student, मोहम्मद जी जो थे उन्होंने इस्लाम को के फाउंडर कौन थे? मोहम्मद। और इन्होंने एक मैसेज दिया कि हमेशा पीस होना चाहिए एज वेल एज भाईचारा होना चाहिए। एंड दे बिलीव दैट कि वो उन्हें मूर्तियों में विश्वास नहीं था। दे बिलीव दैट कि हमें गॉड और अल्लाह पर विश्वास करना चाहिए। और इस्लाम में होली बुक कौन सी है? इट इज कुरान। Now students, the next religion is Christianity. Christianity was founded by Jesus Christ. Now student, on 25th December we have just celebrated the Christmas, and Christmas is celebrated on the birth of Jesus Christ. He was born at Bethlehem in Israel about 2000 years ago. 2000 years ago जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेथलेहम। So Jesus taught about the importance of peace, love, compassion and forgiveness. Jesus Christ ने क्या teach out किया? That we have to live in peace, give love, compassion होना चाहिए, as well as we have to be a person who can forgive anyone. His teachings of Jesus Christ are contained in the holy book that is of Bible. जो भी जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी, it was written or contained in the holy book called as Bible. Now students, we will move to the next religion, that is the Sikhism. Religion emerged in the later part of 15th century. Guru Nanak Dev, the founder of Sikh religion, was born about 500 years ago. आज से 500 years ago गुरुदेव जो सिख समाज के जो फाउंडर से, he was born, that is called as Guru Nanak Dev. He believed that there was only one God and people worship that God is in different form. God एक ही है but हम इन्हें worship करते हैं in different forms. So भगवान एक ही है। Next, the holy book of the Sikh is the Guru Granth Sahib. और इन लोगों की जो होली बुक होती है, सिखिज्म की जो होली बुक होती है, that is called as Guru Granth Sahib जी. It contains the teaching of Guru Nanak Dev. और इस बुक में क्या है? Teachings of Guru Nanak Dev and the 9 gurus who come with him. So this is the Guru Nanak Dev Ji, and these all are the 9 gurus of what? Sikhism. That means 6. Now students, the next religion is Buddhism. Gautam Buddha was the founder of Buddhism. Buddhism के founder कौन थे? Religion के गौतम बुद्धा. Give up his princely life and went out to attain nirvana. उन्होंने अपनी जो princely life थी, जो उनके जो प्रिंस वाले जो उनका जो किंगडम था, सब कुछ छोड़कर उन्होंने क्या किस तरफ अपना कदम बढ़ा? दैट इज कॉल्ड एज निर्वाणा. निर्वाणा मीन्स हर चीजें छोड़ देना और नॉर्मल लाइफ जीना, दैट मीन्स साधु की लाइफ जीना. ही अटेन्ड एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री. After many years of struggle, from that day onwards he came to be known as Lord Buddha. As you can see, this tree is the Bodhi tree, and by sitting down under this tree, Gautam Buddha has taken all his teachings, and after that only he has become Lord Buddha. He told that the people to follow the eightfold path of peace, which consists of right thinking, right speech. उन्होंने क्या बोला? उन्हें सब पीपल्स को एट फोल्ड पाथ को फॉलो करना चाहिए जो पीस की तरफ हमें लेके जाता है. दैट मीन्स वी हैव टू थिंक राइट थिंकिंग, राइट स्पीकिंग, right knowledge, right living, right action, right efforts, right observation and right meditation. The holy book of Buddhism is
Tripitaka and Dhammapada. So these two are the holy books of Buddhism. Now students, the last and the least that is the religion is the Jainism. This religion was founded by Rishabdev. So Jainism is founded by Rishabdev. Lord Mahavira was their 24th Tirthankar. He was born around the same time as Lord Buddha. जब लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ at the same times 24th Tirthankar, that is the Mahavira. Lord Mahavira was also born. He too renounced his wealth and comfort to get the true knowledge just like Buddha. उन्होंने भी अपनी जो भी उनकी जो wealth थी as well as उनकी जो भी property थी kingdom has he also left his wealth. क्यों? ताकि वो उनका knowledge ले सके just like Buddha. He laid stress on right faith, right conduct, right knowledge and non-violence. उन्होंने right faith पर, right conduct पर, right knowledge and non-violence पे workout किया. The followers of Jainism are strictly vegetarians. जो Jainism होते हैं, they are strictly vegetarians. They do not eat non-veg. So now students, this chapter is finished, and if there is any query or doubt related to this chapter, you can ask me anytime.